Good morning everybody. Last class I will discuss about the article number 1.2 resistivity and factor affecting resistivity. In resistivity what is resistivity already discussed, and which factor the resistivity is dependent. Resistivity is dependent in three factors already discusses: the temperature and alloying and mechanical stressing already discussed. Today I will discuss about the article number 1.3 classification of conducting material into low resistivity and high resistivity material. Then depending upon the resistivity, the conducting material may be divided into two types. माने कौन ना resistivity होची गोटे कंडक्टिंग मेटेरियल रे डिवाइडेड होची दी प्रकार रे, माने कोन आ कंडक्टिविटी भी दीटा प्रकार रे डिपेंड होची। गोटे मेटेरियल रे गोटे कंडक्टिविटी कैपेसिटीटा सी भी दीटा फैक्टर उपरे डिपेंडेंट करछि। से दीटा फैक्टर कोन ना लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल आ गोटे रहउची हाई रेजिस्टिविटी मेटेरियल। माने लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल हाई रेजिस्टिविटी मेटेरियल टा कोन ना लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल टा होची जदि गोटे मेटेरियल रे रेजिस्टिविटी लो रहिबो, इन दोज मेटेरियल द रेजिस्टिविटी इज लो, देन this material the conductivity is high because the resistance capacity or opposing capacity is less than the conductivity capacity is more. So those material we called low resistivity material or high conductivity material you can say. Then again high resistivity material means in those material the resistivity capacity or resistance capacity is more than the conductivity capacity is less. So in those conductivity material we can say it is high resistivity material. So then we can say if the resistivity of a material is low, then it is more suitable for conduction purpose, that it is conductivity is more. माने कौन कहला, if the resistivity of a material is low, यदि गोटे material resistance capacity कम थिबो, then it is more suitable for conduction purpose. माने आमे कौन करि परिबा ना ता दिहरे करेंट फ्लो करिया पई हमकु इजीली हबो फ्लो करि परिबा, then it is conductivity is more. से material ता conductivity more ही थाए, तेन ताकु more suitable for uses रे. Then low resistivity material. And low resistivity material to minimize the firstly describe the point 1 low resistivity material. Low resistivity material कौन, to minimize the power loss or voltage drop, it is always desired or required to make use of material having low resistivity. माने कौन, to minimize the power loss. low resistivity material रे ता resistance capacity जदि कम थिबो ताले ता power loss भी कम हो, voltage drop भी कम होबो. it is always to desire to required make a material having low resistivity. तो सेथि पई हमर सब बेले low resistivity material टा mainly uses हुए और हमकु अधिका दरकार भी. then low resistivity material are used in house wiring winding of transformer, motor, generator and for power transmission and distribution. माने कोन low resistivity material कोंटी कोंटी तार uses होची ना, कोंटी कोंटी ना house wiring घर जो आमे wiring करछे कनसेल्ट वायरिंग करी कि कैसीकेपी वायरिंग करी जेकोन से आमे वायरिंग करछे सेठी भी हमर कोन ना लो रेजिस्टिविटी मटेरियल दरकार होची. ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रे भी दरकार होची, मोटर जनरेटर सेट रे जो वाइंडिंग होची सेठी भी हम लो रेजिस्टिविटी मटेरियल दरकार होची. पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कोन ना जोठी हमर पावर जनरेट होची, सपोज हीराकुद रे हमर पावर जनरेट होची सेटा हम पाखरे केमती पहुंचुची ना हम पाखरे एमिति ही पहुंचुची ट्रांसमिशन होची, ट्रांसमिट सेठी हेला ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन रे कोन होला माने जनरेशन सेठी हेला, देन ताकू पुनी जनरेशन जो हेला आम पाखे पुनी पहुँचवा दरकार. एटा पावर सिस्टम रे आम विविडली पढ़ा जेटी रे ना कौन ना आमर तीनटा स्टेज रे आम पाखु पावर पहुँचुची केमिति जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. देयर आर थ्री फैक्टर द पावर विल बी रिसीव फॉर द मेन और
of the people generation transmission and distribution so power आमर से पावर ट्रांसमिशन आसला आम पाक जो आसूँ ग्रिड रु से पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन केत ना कंज्यूमर पाक जो जाऊँगी डिस्ट्रीब्यूशन होती ही आमर दरकार हम ना आमर लो रेजिस्टिविटी मटेरियल जब यूज कले आमर लसेसटा कम हम जहाँफल आमर कौन हम पावर लॉस कम है कंडक्टिविटी बढ़ला जहाँफल कंज्यूमर पाक आमर अधिका मोर पावर पहुँची पार एग्जाम्पल कौन कौन वायर लो रेजिस्टिविटी मटेरियल हो पारे सिल्वर एल्युमिनियम कॉपर etc silver aluminum copper is in the three material as the low resistivity material and more suitable or more uses in our industrial and with our domestic then there are some other property of low resistivity material माने कौन ना low resistivity material लो पुनी property थिबा दरकार जदि एई पांचटा आमर फैक्टर को से जदि सैटिस्फाई करथबो देन द रेजिस्टिविटी मटेरियल इज मोर सुइटेबल और मोर यूजेस इन 5 फैक्टर इज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होइतबा दरकार लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होइतबा दरकार सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी देन 4th पॉइंट इज सोल्डरेबिलिटी 5 पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू करोजन देन इन 5 पॉइंट आई विल डिस्कस इन vividly so first one is low temperature coefficient this refers to the change of resistance with temperature which should be low to avoid voltage drop variation and power loss with change in temperature माने से कौन कहूची ना द रेफर टू चेंज द रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर एमतीका रेजिस्टेंस टा टेम्परेचर सहित चेंज हो मीन्स कौन जदि आमर गोटे जगार सपोज इन एग्जांपल ऑफ गोटे रूम टे ये गोटे रूम सपोज आम धरिबा तो यही रूम रे टेम्परेचर सपोज 33 डिग्री सेल्सियस देन यही रूम रे टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस अबनॉर्मल कंडीशन ले अच्छी तो 33 डिग्री जदि सेल्सियस हम ताले आम ए रूम रे इजिली करेन्ट फ्लो करियो बा कंडक्शन सपोज ए रूम रे टेम्परेचर आमर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री जदि सेल्सियस हम टेम्परेचर कौन है इनक्रीज है तो आम जब से टेम्परेचर इनक्रीज हम कौन हम ऑब्वियसली ता कंडक्टिविटीटा डिक्रीज करिवो सो सेति लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट माने हवा दरकार जो आम यूज करबा से टेम्परेचरटा एते हाई हवा दरकार नुहे एवं फॉल्ट भी हम से अनुसार वोल्टेज ड्रॉप अधिका हम टेम्परेचर बढ़िले तो जहाँफल आम से कंडक्टिविटी कमिबो तो गोटे मटेरियल रे लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो थिबो माने सेठी आम यूज करबा देन the winding of a electrical machine become hot second point the winding of a electrical machine become hot when it is loaded this causes temperature rise माने कौन the winding of a electrical machine become hot माने जदि इलेक्ट्रिकल मशीन भी गरम जदि होउची when it is load condition रे जदि सेटा गरम होउची लॉर्ड दिस कॉजेस टेम्परेचर राइज माने कौन सेठी आमर टेम्परेचरटा बढ़ुची सो इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग मटेरियल इज हाई जदि गोटे रेजिस्टेंस ऑफ ए वाइंडिंग ऑफ ए मटेरियल गोटे मटेरियल रे रेजिस्टेंस बढ़िला केमितिका ना टेम्परेचर बढ़िया फल हाई द पावर लॉस इन द वाइंडिंग विल बी हाई ऑब्वियसली जदि गोटे मटेरियल रे मुझे कहूली प्रीवियसली जदि गोटे मटेरियल रे तार टेम्परेचर बढ़ुची ताले ऑब्वियसली से कौन करिवो ना सेठी गोटे मटेरियल जदि हमर टेम्परेचर बढ़ुची ताले सेठी से मटेरियल रे कौन हम रेजिस्टेंस भी बढ़िवो फल रेजिस्टेंस बढ़िले ता पावर लॉस भी से वाइंडिंग रो अधिका होबो ड्रॉप विल इंक्रीजेस इन देम इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज हाई जदि गोटे मटेरियल रो टेम्परेचर बढ़िले ता रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बढ़िवो जा फल रे सेठी कौन होबो ना हमर पावर लॉस टा इंक्रीज करिवो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन ताको आमे जोठी यूज करिबा सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ आमे कोठी मेनली दरकार ना हमर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र रे
सेठी आम जदि गोटे मेटेरियल जो लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल आसुची तार सफिशिएंट मेकानिकल स्ट्रेंथ भी थिबा दरकार माने नुह कि ताको आम यूज करदेला फल आज आम ताको यूज करवा आउ मेनली 10 डेज कि 15 डेज पर सेठी ब्रेक कर सेमतिका भी आम मेटेरियल यूज करवा नहीं। सो द ओवरहेड लाइन यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of electrical power are subjected to stresses due to their own weight and wind, so the material must have sufficient mechanical strength to withstand against this। माने कौन द ओवरहेड लाइन आउ ट्रांसमिशन लाइन रे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल पावर जो आमर जाऊँगी सेठी कौन हम ना आमर सफिशिएंट मेकानिकल स्ट्रेंथ से पाइबा दरकार जेले जाइए से मेटेरियलटा अधिका दिन पर्यंत विथस्टैंड कर पार अदरवाइज से मेटेरियलटा ब्रेक कर सफिशिएंट मेकानिकल स्ट्रेंथ भी ता सहित रही दरकार एग्नेस्ट दिस एग्जांपल कफर अगेन आउ थी सिल्वर भी हो पार। देन पॉइंट 3 डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स नमनीयता ओडिया रे डक्टिलिटी मीन्स नमनीयता माने कौन गोटे मेटेरियल रे डक्टिलिटी कैपेसिटी भी थिबा दरकार माने कौन जदि जोठी आमर बेंड आम गोटे मेटेरियल को बेंड करने चाहिए ये आम बेंड कर जमीतिका सेप्रे आम यूज करने चाहिए सेमती सेप कर जो मेटेरियल थी ताकू भी आम लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल गोटे रहा दरकार। डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेरियल व्हिच अलाउज इट टू बी ड्रॉन आउट इनटू ए वायर और डिफरेंट शेप आम जमीतिका शेप चाहिए एमती सेमतिका शेप्रे आम गोटे मेटेरियल टाकू कंस्ट्रक्ट करि पारथुवा। सो गोटे इन ए लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल द डक्टिलिटी कैपेसिटी इज मोर रही दरकार एग्नेस्ट दिस। देन नंबर 4 सोल्डरेबिलिटी। सोल्डरेबिलिटी मीन्स गोटे मेटेरियल सोल्डरेबिलिटी कैपेसिटी भी थिबा दरकार माने कौन ना जोठी आमे ताकू सोल्डरेबिलिटी कैपेसिटी रे जोठी आमे ताकू चाहिबा सोल्डरिंग करिया गोटे मेटेरियलटे ताकू आमे सोल्डरिटी कैपेसिटी भी थिबा दरकार एमती से सोल्डरिंग हो पारू थिबो। इफ द जॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सपोज गोटे टी जॉइंट मुझे करी गोटे वायरटे जाइए घर को नेबी काटिकी तो ये टी जॉइंट करी तो ये लूज कनेक्शन न हो मुझे कौन करी ना मुझे गोटे सोल्डरिंग टिके देवी तो से मेटेरियल भी सोल्डरिंग नौथवा दरकार प्रॉपर्टी तार थिबा दरकार। देन इफ द जॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्विस्टिंग द कंडक्टर दिस विल गिव हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। सो मिनिमम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रिजल्ट इफ द जॉइंट इज सोल्डर तो ताको आम सोल्डरिंग करवा निहाती दरकार। ऑल मेटेरियल कैन नॉट बी सोल्डर सब मेटेरियल सोल्डरिंग कैपेसिटी न थाए। सो व्हाइल सिलेक्टिंग द मेटेरियल दिस पॉइंट शुड बी कंसीडर आम जो सिलेक्टिंग करुचे सेठू ही करथिबा सेमतिका मेटेरियल को दरकार जेमती तार सोल्डरेबिलिटी कैपेसिटी थिबो। देन नंबर 5 इज रेजिस्टेंस टू करोजन। रेजिस्टेंस टू करोजन कौन ना द कंडक्टिंग मेटेरियल शुड बी सच दैट इट इज नॉट corrode माने कौन द कंडक्टिंग मेटेरियल शुड सच दैट इट इज नॉट corrode व्हेन यूज्ड इन आउटर एटमॉस्फेयर माने कौन कहूँ रेजिस्टेंस टू करोजन माने मेटेरियल टाको आम जमी बाहर आउटर प्योर एटमॉस्फेयर रे यूज करवा नहीं जदि आम बाहर एटमॉस्फेयर यूज करवा ताले सी धूली हल्का माने सम अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल आसिकी जो तुम वायर रहा से करोजन होबार संभावना अच्छी। तो रेजिस्टेंस टू करोजन आम यहाँ जाना जमी यूज करवा जमी जो आउटर फियर एटमॉस्फेयर लो रेजिस्टिविटी मेटेरियल को यूज करवा ना जहाँ करोजन होगा फल तार कंडक्टिविटी डिक्रीज कर। सो थैंक यू।